So once again, good morning everyone and welcome back to Data Structures Theory Sessions. We have already started our second unit. From the second unit, we are done with arrays and currently we are continuing stack. So inside stack, just in a previous session, we have discussed what is stack, how stack works, and what are the basic operations. And inside that, we were discussing those operations now. So we started with the stack understanding, how we can create a stack, what we require. We require one array and one more variable to remember the topmost position. So we require a data array and a top variable. And then there are a few operations. We started with understanding initialization operation. Initialization is nothing but indicating that I do not have anything inside my array. Array, I'm saying, inside my stack, but here we say inside our array. Now, if top variable is pointing to the topmost place, and if it is 0, then you can say that there is one element at 0th index. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम टॉप को 0 से इनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे. And that's the reason what we do is we go for top equals to -1. Now negative index is not possible, and that is the indication. If top is negative, then our stack is empty, our array is empty. So that's what we have decided as a initialization process. We will assign -1 to the top variable. Then we looked at push operation. Now initially if your top is -1 और अगर आप पहला एलिमेंट स्टैक में डालते हो, अगर पहला एलिमेंट आप एरे में डालते हो, then that first element is going to be at a place or at an index 0. For now my top is -1. -1 से 0 पे अगर मुझे टॉप लाना है तो एक बार प्लस करना पड़ेगा. So the first step we do is we go for top ++, and then wherever your top is pointing to, at that place you will store your data. That is your second step. पहले टॉप को इंक्रीज करो एंड देन टॉप जहां पे भी है वहां पे अपना number डाल दो. So whenever we want to push new element, we are going to perform these two statements. Well, so with those two statements we have seen multiple examples, but we haven't discussed what if our array is full. So the next step we discuss that thing. If my stack is of size 5, अगर मेरा array 5 एलिमेंट का है, if I have already inserted 5 elements, in that case आपका top जो है वो maximum index पे रहेगा. that is going to be max -1. max अगर आपका size है तो index क्या होगा? max -1. So if your top is equals to max -1, then you can say your stack is full. और अगर आपका stack full है तो नई वैल्यू आप स्टोर नहीं कर पाओगे. And that is your overflow condition. That's our overflow condition. My stack is full. Overflow हो गया. So whenever we go for push operation, सबसे पहले हमें ये condition check करना होगा. Just to make sure, do we have enough space to store a new value? If yes, continue the process. If no, just print error message and leave the process. Right? That's how we go. So if this is your push operation, then the next step and from where we are going to start now in the current lecture is let's discuss
What if we want to write algorithm for push operation? So actually what we want is we want a function. We are going to write an algorithm for a function, for a procedure, or for some task. So what is that function? A function that adds new item to the top of your stack. What do you have already, or what are the preconditions? Your preconditions should be something like stack has been initialized, it must be initialized already, and is not full. वो full नहीं होना चाहिए. Only in that case, post conditions, what you can perform your task which will add a new item at the topmost position. So preconditions and post conditions. Now what this procedure will do, this procedure is going to actually insert an element x element को add करेगा to the top of the stack. कौन सा stack? Let us assume that stack is represented by vector s, capital S. ये capital S जो है वो stack है हमारा, and which can contain n elements, or which is containing n elements with a pointer top, capital top. Now all these are just assumptions. When you write equation, after that equation you do where this is this, and entire list you prepare. So this is something like the list of those abbreviations we use here. S is stack, capital N is the number of elements, top is the topmost position, X is the new element. So with this consideration, let us try to write down algorithm. So we want to write algorithm for push operation. As you all know, एक बार आपके पास stack आ गया, तो what you'll do is the first parameter you will pass is going to be your stack. Stack को हम as a parameter pass करेंगे यहाँ पे. Why? Now what if we have multiple stacks? एक से ज़्यादा stack है मेरे पास, और अगर मुझे push operation करना है तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा कौन से stack के अंदर push करूं, right? अगर 4 stack है आपके पास, आप push function call करते हो तो आपको ये बताना पड़ेगा 4 में से कौन सा stack use करूं. So the first parameter is your stack, and then the second parameter is your new element you want to insert, X. Clear? Now when we call this, the first thing that we do is we check for overflow. सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे पास enough space है या नहीं. मेरा stack एक और एलिमेंट कंज्यूम कर पाएगा या नहीं. अगर वो ऑलरेडी फुल है तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम. सो वी विल चेक वेदर स्टैक इज फुल और नॉट. सो विल हैव आवर कंडीशन. अगर टॉप ऑलरेडी मैक्सिमम है, देन योर स्टैक इज ओवरफ्लो and you terminate your process. You return from this place. Look, this is algorithm, so we are not thinking about index. तो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा टॉप इज इक्वल्स टू मैक्स. जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो आप इंडेक्स सोचोगे, और अगर वो इंडेक्स है तो ये कंडीशन हो जाएगा मैक्स -1. मेक श्योर. ओके, सो इफ योर टॉप इज इक्वल्स टू मैक्स, देन योर स्टैक इज फुल. प्रोग्राम के अंदर आप लिखोगे इफ योर टॉप इज इक्वल्स टू मैक्स -1, देन योर स्टैक इज फुल. Yes? When we think about index, max is the size, but index will be 0 to max -1. So that's my last place. Okay? So the first step is to check whether your stack is full or not.
अगर वो full है then we return. If we return then process is terminated. Yes? No, it is going to consider this stack. जो stack आपने pass किया उसी stack को consider करेगा. Right? Okay. So the first step we check stack overflow. If it is not full, अगर वो full नहीं है तो वो return नहीं होगा. अगर वो return नहीं होगा तो वो second step पे जाएगा. Right? Now in the second step we simply increase our top and then next we store our new element. New element store करने के बाद we are done. Return. So you increase your top by 1, top plus plus, and then you store your element, store your value. Value कहाँ पे डालोगे? Data of top जो हमने लिखा था. Now at this place, we don't see that there is data array, because what we do is हम ये नहीं बोलेंगे कि ये stack जो है वो array से बना है. वो लिंक लिस्ट से भी बन सकता है. सो इन एल्गोरिथम हम सिर्फ ये बोलेंगे कि जो आपका स्टैक है उसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे अपनी नई वैल्यू डाल दो. यहां पे हम डेटा नहीं बोलेंगे, वी विल से स्टैक एस. जो एस आपने पास किया, टेक दैट एस, इनसाइड दैट उसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे अपनी नई एलिमेंट एक्स को स्टोर करो. So that's your algorithm. A simple one. Any query or doubt or question? Your resulting C program function will look something like push operation, push function name. Then your first parameter is going to be stack. And second parameter is going to be the value that you want to insert. A value is always going to be the integer data if we take integer stack. And the stack variable s, we already know how to define new data type stack. Okay, if you don't know that, let me tell you again. This is my stack, structure stack, and it has two members. Now if I want to define this stack as a new data type, abstract data type, ADT, तो मुझे क्या करना होगा? I am going to define a new data type using typedef. Typedef is a keyword in C programming language which will define a new data type. The syntax is something like typedef space. You define your own structure. So I'm going to say struct. And that structure is going to have two members inside. Integer data of maximum size and integer top variable. So this is my structure. इस स्ट्रक्चर को मैं नया नाम दूंगा स्टैक. So this stack is a new data type name. ये हो गया नए डेटा टाइप का नाम. आफ्टर दिस अगर मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं स्टैक एस. This is how we can declare a variable of stack data type. ये data type हमने बनाया, right? इस data type को हमने बनाया है. This is derived data type. Let us complete this thing. It will come later. So this is how we define a new data type stack. अगर ये stack अब data type है और इस तरह से अगर मैं variable भी declare कर सकता हूं तो हम क्या करेंगे?
when we go for push, this is gonna be stack S variable. Do you remember when we pass structure to the function, will it be called by value or called by reference? अगर मैं एक स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास करता हूं तो वो कॉल बाय वैल्यू होगा या कॉल बाय रेफरेंस? Online students can post their answers in chat box. Well, Hers and Viral is saying call by value. Well, that's correct. Call by value. अगर आप स्ट्रक्चर पास करते हो फंक्शन में तो वो कॉल बाय वैल्यू होगा. अगर कॉल बाय वैल्यू हुआ तो स्ट्रक्चर की कॉपी जनरेट होगी. जो भी काम आप करोगे स्ट्रक्चर की कॉपी पे होगा. जैसे ही वापस आओगे कॉपी गायब. ओरिजिनल स्ट्रक्चर, देयर इज नथिंग इनसाइड. सो जब आप पुश फंक्शन को कॉल करते हो तो आप अपने स्टैक का एड्रेस पास करोगे एंड आप अपनी वैल्यू पास करोगे. So because of that reason, when I define my push function, I am going to receive address of the stack. So pointer variable मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर. So it's gonna be stack pointer variable and integer normal variable. Now once we insert a new value, हमें कुछ return करने की जरूरत नहीं है because we are already using pointer here. So the return type of this will be void. Okay? Function का return type क्या हो जाएगा? Void. हमें कुछ return नहीं करना है. And this is gonna be your function. अब function के अंदर सबसे पहला if condition. If your top is equals to max minus 1 because this is program. If it is max minus 1, then we say printf stack overflow message, and otherwise else you do something. Something के अंदर क्या होना चाहिए? Top plus plus and then because you are writing a program, तो प्रोग्राम के अंदर आपके पास डेटा एरे है जिसमें टॉप पोजीशन पे आप अपनी वैल्यू को स्टोर करोगे. Now this is what we want to do, but प्रोग्राम में थोड़ा तो चेंज आएगा. Now this is not a pseudo code, this is a perfect C program code. How can we access top and data? Because top is a member of your structure. Data is also a member of your structure. और स्ट्रक्चर के लिए आपके पास कौन सा वेरिएबल है यहां पे? S. करेक्ट. S, which is your stack. So आप टॉप को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे. यूजिंग S आपको टॉप एक्सेस करना पड़ेगा. अगर स्ट्रक्चर का नॉर्मल वेरिएबल है तो S डॉट टॉप चलेगा. बट यहां पे नॉर्मल नहीं, यहां पे पॉइंटर वेरिएबल है तो S एरो टॉप आपको एक्सेस करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ वी एक्सेस ऑल द मेंबर्स. S points to top, S points to data, S points to top, and this becomes your full function of a C program. S points to top is double equals to max minus 1. Then print your message stack overflow return. Else में जाओगे ही नहीं. If it is not full, तो आप else के अंदर जाओगे. You will increase your top once. Then you will store your value at the topmost position inside the data array, and then you will return. So this is your C program code. Any query now?
Well, let us see all the operations first, and then we will try to write down entire stack program. We'll go for operations one by one. Later, we will write the entire program. So this is the algorithm. अब अगर एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन है algorithm का, then you have to write this thing. If there is a question for C program, then you have to write this thing. And when we implement entire stack, we are going to have a menu-driven program. So later, I'll also show you what is menu-driven. Because when we want to demonstrate something, ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार प्रोग्राम रन करोगे, पुश करोगे और खत्म. अगर पुश किया तो आपको चेक भी करना है कि एक्चुअल में वो स्टोर हुआ या नहीं हुआ, तो आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, राइट? एक से ज्यादा पुश करने के बाद आपको पॉप भी टेस्ट करना होगा. सो इन अ सिंगल रन, आप एक बार प्रोग्राम रन करते हो तो आप एक से ज्यादा फंक्शन को टेस्ट करना चाहते हो. And you want to test it in a different scenarios, or in a different conditions, or in a different sequence of operations. And that's why we need menu driven program. A menu is nothing but list of operations, and then you select आपको क्या करना है. जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आपको एक मेन्यू मिलता है, and then you decide आपको कौन सी डिश चाहिए. सेम वे हियर, व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगा सारे ऑपरेशंस का, और आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है. पुश, पॉप, पीप, चेंज, डिस्प्ले, व्हाट, क्या करना है आपको. रेस्टोरेंट में आप एक डिश मंगवाते हो, खाते हो, अभी भी भूख लगी है तो बिल पे कर दिया उसका, आपने दूसरी डिश ऑर्डर की. सो यहां पे भी आप पुश ऑपरेशन करोगे, प्रोग्राम खत्म नहीं होता, वापस से आपके सामने मेनू आ जाएगा. अच्छा, पुश कर लिया, और कुछ. डिस्प्ले, चलो वो भी दिया, डिस्प्ले कर लिया, और कुछ. पॉप करना है, चलो पॉप भी कर लो. सो वन बाय वन you will do those operations, and जब आपका पेट भर जाए, you are done. And then you will say, okay, I am done, I want to exit from this program now. So that will be your menu. We will see how to do that, but right now let us focus on all the operations. So this is our push operation. Let us see the next one, pop. तो पहले हम ये देखेंगे कि how we can pop something. Let us assume we have a stack with data array, and it has few elements already. And the index is something like 0, 1, 2, 3, and 4. Now, if this is the case, this is the current status of your stack, तो आपका top कहाँ पे होगा? Where will be your top? Yes, at index 3. So your top will be pointing to the topmost element. जहां पे भी आपका topmost element है, वहां पे top point करेगा. So it is 3. Now when we go for pop operation, it is always going to remove topmost value. तो वो वैल्यू कहां से मिलेगी? टॉप से. So I can receive that value from where? From the topmost place inside your data array. यहां से आपको वो वैल्यू मिलेगी. Once you extract that value, एक बार आप वो वैल्यू हटा देते हो,
तो उसके बाद टॉप मोस्ट वैल्यू कहां पे है? 2 पे। तो आपका टॉप अपडेट होना चाहिए टॉप माइनस माइनस. So when you want to delete topmost value, or when you want to delete an element from stack, it will be the pop operation. It will take the topmost value and then it will decrease your top. It will decrease your top. Last bench, if you are not interested here, please leave the class. First and last warning. Right now, you all three come to the first line. Come here. Okay, let's continue. So, we take a value from topmost place and then we decrease our top. These two process or steps we have to execute when we want to pop one element. So after this, your resulting array will be something like, well, you have your array 5, 9 and 3 will be the topmost value. This will be the resulting status. And the iterative call for pop will do the same thing. Topmost value को निकालो, top को decrease करो. Topmost value को निकालो, top को decrease करो. So at the end you can return this value. आप वो value, जो value आपको मिला है, वो आप return कर सकते हो. So pop operation is going to return the topmost value and it will also decrease the top variable. But what if my stack is empty? What if my top is pointing to -1? क्योंकि जब लास्ट वैल्यू रहेगी आपके स्टैक के अंदर, योर टॉप विल बी पॉइंटिंग टू 0. और जैसे ही आप लास्ट वैल्यू को रिमूव करोगे, टॉप माइनस माइनस क्या हो जाएगा? टॉप विल बी इक्वल्स टू -1. So when your top is -1, it is actually the indication your stack is empty. And that's the emptiness condition, or that's the condition to check whether your stack is empty or not, or this is the condition for stack underflow. If your top is equals to -1, then you can say stack is empty or stack is underflow. So now we know that we have one condition and we have two steps. And the same thing we are going to follow now. So if we want to have pop operation, the function that we will write is going to remove the top item from your stack and it returns that value. The precondition will be something like your stack has been initialized and it is not empty. The post condition will be, you take the top element and if you remove it, okay, then you have to decrease your top. And that function is going to return the topmost element. Yes? Sorry? Next time it is going to take the next topmost value because we have decreased the top variable. Now look, actually memory के अंदर हमने यहाँ से 2 को हटाया नहीं. It is there. But जैसे top decrease हो गया तो next value तो मुझे 3 ही मिलने वाला है. Right? So explicitly we are not going to remove 2 from memory,
but we are actually going to update the pointer. Simple. मेमोरी के अंदर 2 एज इट इज रहेगा, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी पुश समथिंग इट इज गोइंग टू बी ओवर रिटन, वो ओवरराइट हो जाएगा. ओके, yeah, so coming back to this thing again, the top is referred by top, stack referred by capital S, and so on. So let us try to understand this algorithm now. Now when I say I want to pop something, तो मुझे तो सिर्फ स्टैक पास करना होगा. कौन से स्टैक में से मुझे पॉप करना है. जब पॉप कर लूंगा तो रिटर्न मुझे एक वैल्यू मिलेगी. वो मैं पास नहीं करूंगा, वो एज अ रिजल्ट आई एम गोइंग टू रिसीव इट. सो वेल, वी हैव आवर स्टैक. द फर्स्ट प्लेस वी आर गोइंग टू चेक द अंडरफ्लो कंडीशन. सो इफ योर टॉप इज इक्वल्स टू नल. अब अल्गोरिथम में हम नल बोलते हैं, प्रोग्राम में हम -1 कहेंगे, राइट? So if your top is null, then it is underflow, otherwise, and you return. Otherwise, what you do is you take a topmost value temporarily in some variable. So top से आप एक value उठाओगे, then you decrease your top, and then you return your value. यहां से आप एक value return करोगे. So this is gonna be your pop algorithm. अगर इसके लिए आप प्रोग्राम लिखना चाहते हो, then it is going to be something like, when you call your pop operation, it is going to be %s. But this is going to return one value, तो आप वो वैल्यू को रिसीव करोगे well के अंदर. So this is how you call that function. Clear? This is a function call. इस ऐसे आप उसको कॉल करोगे. लेकिन how you define? So if you define pop function, it will have one stack pointer variable s. Now this is going to return one value. तो इस function का return type integer, क्योंकि integer stack है. data array जो है आपका वो integer है. That's why return type will be integer. And then you have your function. Now inside this function, the first step, you are going to check whether your top is equals to -1. If it is, then you will print a message, stack underflow, stack underflow. Otherwise, in the else part, you are going to take value from top and you will save it in well, so that at last you can return that value. But before you return it, don't forget to decrease your top. Do not forget to decrease your top. Now this is what the process we want to do. But अगर मैं ये कोड लिख रहा हूँ C प्रोग्राम में, तो मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर VAL. वेरिएबल डिक्लेरेशन तो करना पड़ेगा. Now what we do is we are going to initialize this VAL variable with null. हम उसको null से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि अगर आपका स्टैक खाली है, if your stack is empty, then you will return value. तो ये वैल्यू क्या होगी? null. That's why we initialize it with null. And if your stack is not empty, तो आप else part में जाओगे, and what value you have, जो आपको stack से मिलेगा, वही value आप return करोगे. Okay?
So that's one thing. So we declare a well variable. And how do we access all the members of stack? So s points to top, s points to top, s points to data, s points to top. Now this becomes your full pop function in a C program. Right? Any question? Take a time to digest this information. Push operation, pop operation. अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लो. पुश करना है तो टॉप प्लस प्लस टॉप पे डेटा. पॉप करना है तो इससे उल्टा लेंगे हम. पहले डेटा देन टॉप माइनस माइनस. So it is something like पुश एंड पॉप है. तो पुश के लिए आप पहले टॉप प्लस प्लस करोगे एंड देन यू स्टोर योर डेटा एट टॉप. लेकिन इससे उल्टा हो जाएगा. अगर आप पॉप कर रहे हो तो पहले आप डेटा निकालोगे टॉप से एंड देन यू मेक टॉप माइनस माइनस. Yes? Look, if you simply want to delete that value, then you can do it. But आप स्टैक के अंदर वैल्यू डालते क्यों हो? Maybe in future you require that value. आपको फ्यूचर में वो वैल्यू चाहिए तभी तो आपने उसको मेमोरी में सेव किया. अगर नहीं चाहिए तो सेव करने की क्या जरूरत? So that's the reason when we do pop, actually I want that value, that's why I do pop. और अगर मुझे वो वैल्यू चाहिए तो फिर I need to return that value from the pop. प्रिंट करने के लिए ही सही आपको वैल्यू तो चाहिए. और अगर प्रिंट भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो फिर मैं मेमोरी में क्यों डालूं? सिंपल. So generally when we store something in the memory, it is definite that we will require that value at later point of time. Okay. So this is how you can remember push and pop. Both are reverse operations. एक दूसरे से रिवर्स है, उल्टा है. एक वैल्यू स्टोर करेगा, दूसरा वैल्यू निकालेगा. वैल्यू स्टोर करने के लिए पहले इंक्रीमेंट देन स्टोर. तो फिर उससे उल्टा हो जाएगा. वैल्यू डिलीट करने के लिए पहले डेटा देन माइनस. Okay, so we have seen two functions, push and pop. Actually, we have seen three: init, push, and pop. Initialize it, top equals to -1. Insert a new value, push. पहले चेक करो आपका स्टैक फुल है. So the condition is top is equals to max -1. Then it is full. Otherwise you increase your top, store your data. Pop करना है. अच्छा, pop very simple. पहले तो ये चेक करो स्टैक खाली है. टॉप इज -1 तो स्टैक खाली हो गया. अदरवाइज आप पहले टॉप से वैल्यू उठाओगे और देन टॉप माइनस माइनस. Now what if I want to just display my entire stack? Display. I just want to see कि भाई मेरा स्टैक कैसा है at current situation, at present time, what my stack contains. अगर आप अपने स्टैक को डिस्प्ले करना चाहते हो, then let us consider an example.
this is your stack. And you have few values here. Let's say 5, 7, 3, 2. Then your top will be pointing to 3. Now this is the current status of your stack. अगर आउटपुट स्क्रीन में आपको ये स्टैक प्रिंट करना है तो sorry, a push will be used to insert a data. PUTS, puts. Puts nahi, put S. It is actually put S to print a string. Get S, put S. We have two functions. And it is related to string. We have integer data here. Well, how do we do that? Forget it. पहले तो ये सोचो कि अगर आउटपुट में मुझे वो दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा. So maybe we can have my stack title, and then we want to display this entire stack. Now remember, when we are talking about stack and queue, it is ordered data. ये जो data है उसका order matter करता है. 5, 7, 3 and 2. That order does matter a lot. इसको मैं change नहीं कर पाऊंगा. एंड अगर यूजर को दिखाना है तो जैसे आपको ये दिख रहा है अभी, सेम वे मुझे यूजर को प्रिंट करके दिखाना होगा. टॉप मोस्ट वैल्यू इज 2, टॉप मोस्ट वैल्यू इज 2, बिलो दैट आई हैव 3, बिलो दैट आई हैव 7, बिलो दैट आई हैव 5. So this is how we can display our stack. Correct? So if we want to print these things, then inside a program, we need a print statement, printf. My stack, new line. My stack and new line. अब उसके बाद ये numbers में print कर रहा हूँ. What I'm doing, I'm printing those numbers. So I need one printf for that also. And to print a number, %d. एक number print करने के बाद नई line, new line, so /n. And that %d will have a value from where? From your data array. Your data array. अब एक तो नंबर नहीं है, एक से ज्यादा नंबर है. We'll go for a for loop. We will go for a for loop. So जितने नंबर है उतने नंबर प्रिंट कर पाऊंगा. Okay, I'll go for I equals to something, I less than greater than something, I plus plus or minus minus. We'll decide it. But if I take I as a loop control variable, then I can go for data of I. And if I'm going for display operation, then I'll have my stack. Correct? I'll have my stack variable S, so I can access my S points to data. S arrow data, and into the square bracket I is the index. Now you tell me you have started from 2. You have started printing your stack from 2. Now what is the index of your topmost value? 3. And you can have that topmost index from top.
So this is where we want to start our process. तो I जो है उसका initialization क्या होगा? S points to top. Clear? I equals to top. And then what we do is we go in downward direction where your indexes are decreasing. तो आपकी लूप जो है वो I माइनस माइनस करेगा. कहां तक चलोगे आप? You will go up to 0. Now 0 is included. 0 is included. So till your I is greater or equals to 0, आप ये लूप चलाओगे and then you will stop. Now this is your display operation. हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, so return type is void. Return type void. Now this becomes your display operation. एक integer I declare करना पड़ेगा as a loop control variable, and that's it. No. Top की वैल्यू 3 है. Inside my program, it is pointing to the topmost element, which is having index 3. Top is pointing to the topmost element. वो point कैसे करेगा? By storing its index. Top के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करेंगे जो वो इंडेक्स होगी. Because top is not a pointer variable in real. वो तो एक इंटीजर वेरिएबल है, तो वहां पे हम इंडेक्स स्टोर करते हैं. एंड दैट्स द रीजन व्हाट वी डू. हम टॉप को यूज कैसे करते हैं? एज अ इंडेक्स. स्क्वायर ब्रैकेट में टॉप लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? वो इंडेक्स है. वेल, सो दिस इज योर डिस्प्ले ऑपरेशन. Loop is going to continue till the end of your stack or till the bottom of your stack. तो एक करके वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा. Now display is very much simple, so I never find that display algorithm or display function is being asked in the examination. But at least you should know how to display it, because when you implement your stack, you will need display operation. So this is the fourth operation we have seen after init, push and pop. The fourth one is display. Yeah, you can print it in inverse order, but then make sure end user is not end user is not misguided or not misunderstood. अगर आप इसको 5732 प्रिंट करते हो तो एंड यूजर को ये नहीं लगना चाहिए कि टॉप मोस्ट एलिमेंट 5 है. That's it. Yeah, you can print index alongside, but हम कभी भी यूजर को ये नहीं बताते कि हमने एरे यूज किया है या कुछ और. हम इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट एक्सेस करते हैं या पॉइंटर के थ्रू. And it is not needed, because end user is not interested in how you store that data. And that's the reason we define stack as an abstract data type. यूजर को तो सिर्फ इतना चाहिए कि पुश, पॉप, पीप, चेंज, डिस्प्ले होना चाहिए. दैट्स इट. अब वो आप कैसे करते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि if this is TC1, okay, file handling नहीं हुआ. Okay, well, in C we have file, capital FILE, file, data type, just like this stack. When you want to work with file,
you use some functions f open, f close, f printf, f scanf, which is going to open, close, read or write your file. अब वो इंटरनल कैसे परफॉर्म करता है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज माई डेटा इज प्रॉपरली स्टोर्ड इनसाइड अ फाइल, आई एम डन, आई एम ओके. अब वो इंटरनली क्या परफॉर्म करेगा, आई डोंट केयर. सेम वे हियर, जब आप स्टैक बनाते हो तो एंड यूजर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. वो नंबर देगा, आप स्टोर करोगे, वो नंबर मांगेगा, आप वापस दोगे, दैट्स इट. Yeah, any more questions? We'll take a 2-minute break here because we're gonna continue next lecture also. So let's take a small break, 2 minutes break only. Do not leave this class or this meeting, be here. Just freshen up, and with a fresh mind again we will continue and we'll go for the next operation. By that time, if you have any query, you may ask. Give me your numbers. 66. 66. 66. I don't agree. Yeah. Thanks. And next. 002. 165. 171. 166. 025. 30. 30. 31. 79. 65. 26. Okay, I hope everyone is back and let's continue now. So we started with init operation, then we have seen push, pop and display. पुश का मतलब है एक नई वैल्यू इंसर्ट करना, पॉप का मतलब है एग्जिस्टिंग वैल्यू डिलीट करना.
और वो एग्जिस्टिंग कहां से लेगा? टॉप मोस्ट, हर बार टॉप मोस्ट वैल्यू देगा वो. नाउ वी वांट टू गो फॉर पिप ऑपरेशन. पिप, what it does, a pip operation is going to read the value from top without removing it. तो पॉप और पिप दोनों एक तरह के ही हैं, दोनों आपको टॉप मोस्ट वैल्यू रिटर्न करेंगे. बट द डिफरेंस हियर इज पॉप ऑपरेशन वो वैल्यू रिमूव कर देगा, पिप ऑपरेशन वो वैल्यू रिमूव नहीं करेगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. पॉप फंक्शन वैल्यू रिमूव करेगा, पिप फंक्शन वो वैल्यू रिमूव नहीं करेगा. अदरवाइज बोथ आर इक्वल, दोनों टॉप मोस्ट वैल्यू आपको रिटर्न करेंगे. Which means if I say that look, this is something like pop operation I do. This is my pop operation. Just a minute. Let me again copy this part. So what we want is we want to have this forget it. Let me draw it again. So we have a stack and we have few values here. So the index will be 0, 1, 2, 3 and 4, and the topmost value is 2 at index 3. Now if I go for pip operation, then it is going to have the topmost data, topmost value, data of top वो get करेगा. Now in pop operation हमने क्या किया था? Top minus minus and then we return a value. अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ये डेटा डिलीट नहीं करना है, if I am not going to delete this data, तो मेरा टॉप मोस्ट पोजिशन जो है वो एज इट इज रहेगा. So we need not to decrease our top. अगर आप टॉप माइनस माइनस नहीं करते हो, देन इट बिकम्स पिप. वो बन गया पिप. अगर मैंने टॉप को अपडेट नहीं किया तो मैंने क्या किया? सिर्फ टॉप मोस्ट वैल्यू लेके रिटर्न कर दिया. लेट इट बी एज इट इज, जो जहां पे है ऐसे ही पड़ा रहेगा. वेरी सिंपल. सो द चेंज फ्रॉम पॉप टू पिप इज रिमूव टॉप माइनस माइनस. एवरीथिंग एल्स इज सेम. अंडरफ्लो कंडीशन भी आपको चेक करना होगा. इफ आई आस्क टॉप मोस्ट वैल्यू क्या है, बट अगर आपका स्टैक खाली है तो आप कुछ बोल पाओगे? नो. इंस्टेड व्हाट यू से इज भाई स्टैक खाली है, टॉप मोस्ट वैल्यू नहीं मिलेगा. एंड that's what we do here. So in this algorithm, what we do is first we go and check underflow condition. If top is null, then we print stack is underflow and we return. Otherwise हम क्या करेंगे? टॉप मोस्ट वैल्यू को ही सीधा रिटर्न कर देंगे without updating top variable. You simply return your topmost value and done. So as a very simple pip operation here. कब चाहिए? इसकी जरूरत क्या है? अगर सिर्फ आपको देखना है कि भाई टॉप मोस्ट वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू विच इज देयर ऑन द टॉप ऑफ योर स्टैक, अगर उसके हिसाब से आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप पिप ऑपरेशन कर सकते हो. तो आप क्या कर सकते हो? पिप कर सकते हो.
मान लो कि कुछ वैल्यूज आपने स्टैक के अंदर स्टोर करके रखी है, ओके, एंड एक नई वैल्यू आपके पास आती है। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आप नई वैल्यू को कंसीडर करोगे या टॉप ऑफ द स्टैक कंसीडर करोगे। तो पहले आपको कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने के लिए आपको दोनों वैल्यू चाहिए। तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है वो चेक करने के लिए आप पिप करोगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। देन यू कैन कंपेयर एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजन। द सेम प्रोसेस वी आर गोना डू इन infix to postfix conversion process। इनफिक्स से पोस्टफिक्स जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हम वहां पे ऑपरेटर चेक करेंगे, भाई मेरे स्टैक के अंदर कौन सा ऑपरेटर है और इनपुट में मुझे कौन सा ऑपरेटर मिला। अब दोनों ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कंपेयर करेंगे, भाई किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, पहले मैं उसको कंसिडर करूंगा। सो एट दैट टाइम we will require pip operation। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल व्हाई वी नीड पिप। इस तरह के कोई भी ऑपरेशन है तो आप पिप यूज कर सकते हो। when you just want to see what is it there on the top, you can go for pip। so that's pip। now let's have a look at one last operation, change। What if I want to change something inside my stack? Inside the stack, आपने कुछ वैल्यूज याद करके रखी है और बाद में कोई आता है, भाई फॉरगेट दैट वैल्यू, इंस्टेड ऑफ दैट यू रिमेंबर दिस थिंग, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ना चेंज करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप जितनी वैल्यू है वो पहले निकालोगे, किसी और स्टैक में डालोगे, देन यू विल हैव द रिक्वायर्ड वैल्यू, उसको अपडेट करोगे और वापस से जो वैल्यू थी वो फिर से लेके आओगे। दैट्स द ओवरहेड। वो उतना लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना है। एंड इवन दैट प्रोसेस रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टैक, एक और भी स्टैक चाहिए उसको, दैट्स नॉट फिजिबल। तो हम अगर चेंज करना चाहते हैं कोई वैल्यू, देन वी गो फॉर द चेंज ऑपरेशन। व्हाट इट डज, इट सेज this operation is to change the existing value within your stack। stack के अंदर existing value जो है उसको आप change करना चाहते हो। let us take one scenario। let's say we have a stack here, I have my data array, I have my top variable, and let us assume we have 4 values, 7, 3, 2 and 5। so your top is pointing to topmost value index 3। now this is your current status। अब यूजर अगर कोई वैल्यू चेंज करना चाहता है तो वो इस स्टैक को प्रिंट करेगा। यूजर को कैसे पता चलेगा अंदर क्या है, तो यूजर क्या करेगा, भाई यूजर इज गोइंग टू प्रिंट इट। सो यू विल हैव माय स्टैक एंड यू विल हैव वैल्यूज लाइक 5, 2, 3 एंड 7। अब अगर यूजर को वैल्यू 3 अपडेट करनी है, इफ यूजर वांट्स टू अपडेट वैल्यू 3, तो यूजर क्या करेगा। if user wants to update this value 3 and he wants it to be to make it let's say 6, 3 की जगह पे उसको 6 करना है, then what user will do, well user doesn't know indexes। यूजर को इंडेक्स पता नहीं है। यूजर तो पोजीशन कैलकुलेट कर सकता है, the topmost position is 1, 2, 3, 4, दिस इज द पोजीशन। तो यूजर ये पोजीशन कैलकुलेट कर सकता है। तो यूजर आपको ये बोलेगा कि भाई थर्ड पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको 6 कर दो, मेक इट 6, वॉट एवर इज देयर ऑन द पोजीशन 3।
Look, we go for position because it is definite, fixed. अगर मैं वैल्यू से जाता हूं तो एक से ज्यादा बार सेम वैल्यू हो सकता है. 3 may be there for more than once. तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा 3 अपडेट करूं, पहला 3 या दूसरा 3. That's why we go for position. Position fixed है. Okay, so position 3 I want to update and make it 6. But for this, you have position 3, but you have index 1. You have position 3, but its corresponding index is 1. जब आपको कोई डेटा अपडेट करना है तो आप क्या करोगे? यूजर क्या बोलेगा? ओके, यू गो फॉर चेंज. जो भी स्टैक है आपके पास, ओके, जो भी आपके पास स्टैक है उसमें गिवन पोजीशन पे नई वैल्यू को डाल दो, न्यू वैल्यू एन वैल्यू. आपको करना क्या होगा? अच्छा ठीक है, अगर नई वैल्यू को स्टोर करना है, एन वैल्यू को स्टोर करना है कहीं पे, देन आई एम गोइंग टू अपडेट इट. डेटा के अंदर गिवन इंडेक्स IDX पे मैं उसको स्टोर कर दूंगा, मेरा वैल्यू अपडेट हो जाएगा. बट हाउ कैन आई हैव दिस IDX फ्रॉम गिवन पोजीशन POS? मेरे पास पोजीशन है और पोजीशन को यूज करके मुझे इंडेक्स फाइंड करना है. So how can we convert it? Now let us have one thing. We have index something like 3, 2, 1 and 0. This is your index. But correspondingly position आपकी क्या है? 1, 2, 3 and 4. And now you want to relate these numbers. How can you do it? Think about it and give your solutions. आप ये कैसे कर पाओगे? एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए मुझे जो IDX कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन पोजीशन. Give me that equation. Give me that IDX equation here. Well, let me give you one more hint. Position 1 starts with index 3. Now, what is that 3? It is actually top. तो position 1 हर बार टॉप से स्टार्ट होगा. टॉप अगर 4 है तो इन पोजीशन 1 4 पे जाएगा. सो इट इज नॉट ऑलवेज 3. इंडेक्स 3 पोजीशन 1 फिक्स्ड नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन टॉप. तो IDX कैलकुलेशन जो है वो टॉप पे भी डिपेंड करेगा. नाउ यू थिंक. Sorry? Well, we have one equation who says top minus position minus 1. That will be your IDX. Try to make the calculation.
top is always 3, it is fixed. Position may change. अगर position भी 1 में डालता हूं, so it becomes 3 minus 1 minus 1. 3 minus 1 2, 2 minus 1 1, so idx is 1. No. Okay, let's go for it. Top minus pose plus 1. तो ये एक एग्जाम्पल के लिए हमें सही आंसर मिला. लेट्स चेक इट आउट फॉर अनदर वन. टॉप माइनस पोज प्लस 1 हमें चाहिए. टॉप इज फिक्स्ड 3. लेट्स गो फॉर सेकेंड पोजिशन. सो इट बिकम्स 3 minus 2 plus 1. What will be the answer? 2. 3 minus 2 is 1. 1 plus 1 is 2. Correct? Let's check it out for one more time. 3, position 3. So it is 3 minus 3 plus 1. Give 1. Top is 3. Position is 4. So it becomes 3 minus 4 plus 1. Index 0. That is also correct. And that's what we have here. When we increase our position, we actually decrease our index. Fourth position is having index 0. So we have the correct equation now. It says top minus position. Top is fixed. जहां से आप position calculate करते हो. Position जैसे ही increase होगा, आपका index decrease होना चाहिए. So top minus position. अब पोजीशन 1 2 3 4 है, लेकिन इंडेक्स जो है वो 0 1 2 3 होता है. दैट्स वाई वी गो फॉर प्लस 1. दैट्स वाई वी गो फॉर प्लस 1 हियर. एंड दिस इज द इंडेक्स कैलकुलेशन. एक बार आपको इंडेक्स मिल गया तो डेटा ऑफ इंडेक्स आप अपडेट कर सकते हो. दिस इज नॉट डन येट. यूजर तो कोई भी पोजीशन देगा. What if user has given you the position 7? यूजर ने तो दे दिया कुछ भी, उसने कैलकुलेशन करने में गलती कर दी. पोजीशन कैलकुलेट करने में गलती कर दी उसने, और उसने पोजीशन 7 दिया. 3 minus 7 plus 1. क्या होगा? What it will be? Minus हर कोई अलग अलग जवाब दे रहा है. What it will be? 3 minus 7 minus 4 plus 1 minus 3. Index can never be negative number. Index कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर आप यही IDX को यूज करोगे, then program will generate an error, runtime error. तो यूजर तो कुछ भी दे सकता है. Our program must be capable of finding this kind of errors. आपका प्रोग्राम ये इस तरह की एरर हैंडल कर सकना चाहिए. It should be able to handle all these errors. Now this is one. What if user by mistake give you position 0 or maybe negative position? 3 minus 0 is 3 plus 1 is 4. Index 4 is also not valid here, right? Index 4 is also not valid. What you can simply think about is your index is within the range of 0 to top. Your IDX must be within the range of 0 to top. Only in that case you can say this is a valid index. इसके अलावा कुछ भी है then invalid index. Invalid कब होगा? जब invalid position होगा. तो यूजर को आप मैसेज दोगे
given position is not valid. यूजर को आप एक मैसेज दे दोगे, given position is not valid. So you calculate your index and then you validate your index. If your index is within the range of this, only then you update the value. Otherwise, print a message. So that's what the process we need to go for when we want to apply change. If this process is clear, then let's have a look at the algorithm. User is going to give you stack, position and a new value. ये तीन चीजें आपको यूजर देगा. जैसे ही आपके पास स्टैक आता है, आप सबसे पहले तो अंडरफ्लो चेक कर लोगे. अगर स्टैक खाली है तो कुछ अपडेट नहीं करना है. Nothing to change if your stack is empty. So the first condition is going to be the underflow condition. After that, what you'll do is you will calculate your index based on top and position. So top minus position plus 1. आपने एक index calculate कर लिया. Then you are going to validate your index. Your index must be greater or equals to 0, and at the same time it must be less than equals to top. This is the valid range. अगर वो valid range है, then you are going to update your value. Okay? From your stack at a given index, update the value. Else, invalid position message, and you are done. So this is the change operation. ये हो गया अपना change operation. Now if you want to write change function, अगर आप C प्रोग्राम में change function लिखना चाहते हो तो आप change call कैसे करोगे? change पहले आपने stack पास कर दिया एड्रेस, उसके बाद आप पोजीशन पास करोगे जो यूजर देगा, एंड उसके बाद आप न्यू वैल्यू पास करोगे जो यूजर देगा. दिस इज हाउ वी कॉल आवर फंक्शन. हाउ डू वी डिफाइन दिस फंक्शन? ओके, वी वांट टू हैव चेंज ऑपरेशन where the first parameter is stack pointer variable. Second parameter is simple integer position. Third parameter is simple integer new value. When we are successfully updating the value, we are done. Original data update हो जाएगा. हमें कुछ return नहीं करना है यहाँ से. So the return type will be void. Return type will be void. And this is your entire function. Now within that function, सबसे पहले तो आप check कर लोगे if your s points to top is equals to -1, then printf stack underflow and nothing to do. Else, in the else part, you are going to first calculate the index idx, which is nothing but going to be s points to top minus given position pos plus 1. Now that's your index. Once we calculate that index, we go for nested if to validate the index idx. This idx must be greater or equals to 0, and it must be less than equals to top. Remember, जब भी मैं top access करूंगा, I'll have s arrow top because it is a member of the stack. So this is my condition.
Now if that condition is true, then I'll say inside my data array at a calculated IDX index, I'm going to store a new value. Else printf invalid position. तो यहां पे आपका ये else खत्म हुआ and then आपका पूरा function खत्म हुआ. So this is how you can write your C function inside a program. Read this entire process once. Try to digest. If you have any query, you may ask. Any query? Well, so this was the operations on stack. We have seen init, push, pop, peep, change and display. इसके अलावा दो और ऑपरेशन आप बना सकते हो, is empty, is full, जो सिर्फ आपको ये इंडिकेशन देगा हाँ स्टैक फुल है नहीं है, हाँ स्टैक खाली है या नहीं है. And how to check whether stack is full or empty? We know that. Top is max -1 तो full, top is -1 तो empty. तो दो और ऑपरेशन भी आप बना सकते हो जो आपको सिर्फ बताएगा स्टैक फुल है या खाली है. So the next step now is to have this exercise. Implement a stack of size something and which can store the integer values. So we wanna perform this practical now. Now with this exercise, what I'm going to do is I'm going to write my code here just in the lecture, and I'm going to show you how you can implement this thing. I'll kickstart your implementation part. यहाँ पे मैं आपको menu driven program कैसे बनता है वो दिखाऊंगा. And I'm going to show you some of the functions. क्योंकि once you have this entire code here, you just need to copy and paste. What I'm going to do is I'm going to write 2 or 3 operations here, and then I'll show you
how it works. We will run that code and we will see. If time permits, I'm going to complete this code. Yeah, so what we'll do now is let us jump to the coding environment. Okay. So I have my workspace open here and I have one stack folder. Okay, this is nothing but just a stack folder. Now inside that folder, first I'm going to create one file. Let's say stack.c file, our C file here. Now this is nothing but a demonstration of stack demo, and we are actually going to make this a menu driven program. यहाँ पे मुझे एक मेन्यू चाहिए. जब भी मैं ये प्रोग्राम रन करूं तो मुझे एक मेन्यू चाहिए जो मुझसे पूछे कि मुझे क्या करना है. Right? So let us focus on the menu driven program. Forget about stack. We always start our program with hash include, let's say, stdio.h, right? And we go for int main. Inside that main, we want to create a menu. So I'm going to have a list of items. What are the items for us right now? It is nothing but the operations. Push operation, right? We have number of operations. If I say 1 is push, in the new line, I'm going to say 2 is pop. In the new line, let's have 3 as peep. Push pop peep. 4 is push pop peep change. Let's have fifth one display. I can have 2 more. Sixth one is empty. Seventh one we can have is full. And the 8th one, मेरा पेट भर गया. I'm done. Huh? Display /n. Okay. Yep. So /n. So this is a list of the items. So actually not items here. We have a list of operations. What I want to perform. Now when I print this list, we say that okay, printf, this is just a list of operations, right? List of operations. अब जैसे ही लिस्ट मतलब मेनू मैंने दिखा दिया यूजर को, तो यूजर क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा. So we need to ask user printf enter your operation number. Enter your operation number. And if user is going to enter it, we need to scan it. So scanf
sorry, scanf %d and then ampersand choice. Whatever you want, you can have it, or you can have operation op, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो. Let me have choice ch. So that's the user's choice. Now I need to have the ch variable declared already. Okay, so we declare that variable ch. Ch is just a choice given by user. So when I run this code, it is going to print this menu. Then it will ask user, please enter your choice here. Let's have /n. So enter your choice and user is going to give the choice. अब यूजर ने अगर आपको चॉइस दिया है तो आप क्या करोगे? What if user has entered 1? Then correct, then you want to go for push operation. What if user has entered 5? Then you need to go for display operation. So based on the choice given by user, you want to perform something. Switch case, right? So what we do here now is we are going to have a switch case here. Switch on ch variable. Switch on ch. And we are going to create multiple cases now. Value of ch may be 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 8. And you may also have default case. So if case is 1, push operation and then break. Second one, case 2, pop operation and break. Right. Similarly, you can have case 8, exit, and you can have default case. In default case, we just print a message. Please enter valid choice. Okay, please enter valid choice. So likewise, you can create all the cases here. Case 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So inside your case 1, what you have to do actually is you have to call push function. And now you know that if you want to call push operation, you have to pass address of your stack and you have to pass a value to be inserted. जो वैल्यू आपको इंसर्ट करना है. तो अब ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए. एक स्टैक होना चाहिए आपके पास और एक वैल्यू होनी चाहिए आपके पास. करेक्ट? वेल, वैल्यू तो यूजर के पास से लेना है. तो यहां पे हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू आस्क यूजर printf please enter value, and we are going to scan that value here. Scanf %d %val. तो मैं वो वैल्यू पास कर सकता हूं, बट वेयर इज val वेरिएबल? So let us declare that val variable here. हो गया? तो वैल्यू तो आ गया. Now where is your stack? स्टैक तो बनाना पड़ेगा.
So how do we do that? Well, we are going to define our stack as a structure. So initially what you can do is you say struct, which will have two members, integer data array and integer top variable. Now data array is going to have the maximum size, okay, which is actually defined, has defined max, let it be 5. So that is how I create my structure. If that structure is stack, then I can declare my stack variable as struct stack s. That's how we can declare a variable. But what we want to do is we do not want to disclose कि भाई हमने जो स्टैक बनाया है वो एक्चुअली स्ट्रक्चर है. मुझे किसी को ये पता नहीं चलने देना है कि मेरा स्टैक जो है वो स्ट्रक्चर है. अब यूजर को जब भी स्टैक का वेरिएबल चाहिए तो इस तरह से वो डिक्लेयर करेगा. तो डिक्लेरेशन सिंटैक्स तो मुझे बताना पड़ेगा. जैसे ही मैं ये सिंटैक्स बताऊंगा उसको पता चल जाएगा कि मैंने स्ट्रक्चर यूज किया. करेक्ट? तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस एज अ डेटा टाइप. So I'll say type def is a keyword, and then I'm going to define this stack as a data type like this way. Okay, so this is how I'm going to define a new data type. तो अब मैं यूजर को क्या बताऊंगा, भाई अगर तुझे स्टैक का वेरिएबल चाहिए तो इस तरह से ले ले, स्टैक एस. नाउ विद दिस स्टेटमेंट यूजर को पता नहीं चलेगा कि वो स्टैक जो है वो स्ट्रक्चर है या कुछ और. सो वी मेक इट एब्स्ट्रैक्ट, नॉट फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी तक हमने वो ऑपरेशंस डिफाइन नहीं किए हैं. एंड वी डू नॉट हैव अ सेपरेट फाइल. अभी के लिए हमने इसको क्या किया, सेम फाइल में लिखा है. टू मेक इट फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट हमें क्या करना होगा, आप एब्स्ट्रैक्ट तभी बोल पाओगे जब यूजर को ये कोड भी पता ना हो. यूजर डज नॉट नो दिस कोड, तो ये कोड भी मैं यहां पे नहीं रखूंगा, इस कोड को मैं कोई अलग फाइल में डालूंगा. लेट्स गो फॉर इट. इन द सेम फोल्डर आई एम गोइंग टू हैव अ न्यू फाइल, and let me call it h, stack.h. So h, it is just to make you aware, जैसे आप हेडर फाइल यूज करते हो. तो ये कुछ उस तरह से ये स्टैक का हेडर फाइल हो गया. एंड हियर I'll have a stack implementation. So at this place I'm going to implement my entire stack. Everything related to stack I'm going to have here. अब मैं एंड यूजर को क्या बोलूंगा, ये हेडर फाइल इंक्लूड कर लो. यू इंक्लूड दिस हेडर फाइल और आपको पूरी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी. तो यूजर क्या करेगा, इसके अंदर he is going to include that file, hash include, and this is not a library file. तो आप एंगुलर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे यहाँ पे. You are going to have double quote, and inside that if it is in the same folder तो आप simple stack.h लिख सकते हो. वरना ये क्या होना चाहिए, relative path होना चाहिए. So this is how we include that file. तो जैसे आप stdio.h फाइल कभी खोल के नहीं देखते हो, आपका एंड यूजर भी stack.h फाइल खोल के देखेगा नहीं.
तो उसको पता भी नहीं चलेगा आपने स्ट्रक्चर यूज किया, एरे यूज किया, क्या किया है. But still, when you include that file, you have that functionality. तो आप ये वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, right? You can declare this variable and you can use that variable also wherever you want. But अब अगर हमने एक नया स्टैक बनाया है तो वो इनिशियलाइज होना चाहिए. विदाउट इनिशियलाइजेशन हम कुछ नहीं करेंगे. तो हम ये बोलेंगे कि भाई जैसे ही आप नया स्टैक बनाते हो सबसे पहले आप उसको इनिशियलाइज करो. सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसको इनिशियलाइज करोगे. नाउ व्हाट इज दिस इनिट? इनिट, पुश, पॉप, चेंज, डिस्प्ले, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे. एंड वी हैव टू डिफाइन दोज ऑपरेशंस इन द हेडर फाइल ऑफ योर स्टैक. तो मुझे क्या करना होगा, मेरी जो हेडर फाइल है यहां पे, इसके अंदर मैं वो सारे ऑपरेशंस डिफाइन करूंगा. Right? Within this file, you should have all those operations. Init, push, pop, peep, then change, display, is empty, is full, and so on. So we are going to define those operations here. Now when I say define operation, मतलब उसका function यहाँ पे लिखना पड़ेगा. What is init? It will not return anything, so void. Init is the function name, and inside this function I should receive a pointer variable of stack. How should I initialize? S points to top equals to -1. Just to give acknowledgement, यूजर को एक मैसेज देंगे हम. Stack initialized. That's it. SED, ZED, whatever. And the printf. Yeah, let it be as it is. यहाँ पे printf आपको error देगा because we do not have stdio.h included. It's okay. हम ये header फाइल को compile नहीं, हम C फाइल को compile करेंगे. C फाइल के अंदर before your stack.h you already have stdio.h, तो वो चलेगा. एंड स्टिल अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है कि भाई वो रेड लाइन जो है, ये रेड कलर मुझे अच्छा नहीं लगता है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंक्लूड दिस एट दिस प्लेस एंड इट्स ओके. डबल टाइम इंक्लूड होगा बट कंपाइलर वो हैंडल कर लेगा. ओके, प्री प्रोसेसर हैश इज प्री प्रोसेसर टास्क, तो प्री प्रोसेसर जो है वो हैंडल कर लेगा. Well, so this is how we initialize. This is how we init. So let's focus on menu-driven program back. We have included header file. We have taken stack variable. We have initialized that stack, and we have a menu. And then if user selects 1, we go for push operation. Let me comment it out, क्योंकि हमने अभी तक पुश डिफाइन नहीं किया है. So let me comment this function call at this place right now.
but this is how my entire program should go. यहाँ पे मेरा स्विच केस खत्म हो गया एंड उसके बाद मेरा प्रोग्राम भी खत्म हो गया. Now this is not done yet, but let's run this code and see what happens. अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या होता है, चलो देखते हैं. ओके, सो सबसे पहले हमें मैसेज मिल गया स्टैक इनिशियलाइज्ड. सो आई एम श्योर my stack has been initialized and top is pointing to -1. After that we have a list of operations and it is asking me enter your number, operation number. Well, we'll see what is the problem. /n है या कुछ whatever, या तो फिर जब प्रिंट हुआ तब ये आउटपुट स्क्रीन छोटा था इस वजह से. बट इफ आई से ऑपरेशन 1 तो वो स्विच केस 1 में जाएगा और मेरे पास से एक वैल्यू मांगेगा. करेक्ट. मान लो कि आपने कोई वैल्यू दे दी एंड यू गो फर्दर, तो पुश फंक्शन कॉल करने से वो वैल्यू स्टोर भी हो जाएगा. बट उसके बाद क्या होना चाहिए, सॉरी, स्टैक अपडेट होना चाहिए. मान लो कि वो भी हो गया, जैसे ही मैं पुश फंक्शन बनाऊंगा वो अपडेट हो जाएगा. देन वापस आपको मेन्यू मिलना चाहिए. आपका पेट अभी तक नहीं भरा. यू वांट टू ऑर्डर अ न्यू डिश, राइट. एक मसाला डोसा खा लिया, अभी भी इडली खाना है. बट यहां पे क्या हुआ, माई प्रोग्राम इज एंडेड. When I press enter, I am back to the command prompt, which indicates my program is terminated. So after this, once I have completed this switch case, ये switch case खत्म होने के बाद वापस से मुझे कहां जाना है, मेनू पे. I want to repeat this process again and again. कहां तक रिपीट करना है, जब तक यूजर एग्जिट नहीं बोलता. I want to repeat this thing. So it depends on user, not on my program. So whenever we want to repeat something, हम क्या करते हैं, if you want to repeat something, look. Yes, we can use go to statement, but use of go to is a bad programming, because go to is unconditional jump. Never use go to statement in your program. Wherever it is possible, never use it. Okay, so we go for loop, while loop, and I want to make it infinite. I want to make it infinite. मेरा प्रोग्राम तो इनफाइनाइट रन करेगा जब तक यूजर नहीं बोलता. So I'll have infinite loop, and then what we do here is, let's have this entire code, your menu, user's choice, and the switch case. Your entire code is going to be the part of your while loop. while loop के अंदर डाल दोगे आप उसको. So now this is a part of while loop, और ये रिपीट होता चला जाएगा until and unless user gives you the option 8. And that's why we have case 8. And at this place, what I can do is I can exit with status 0. Now that's gonna terminate my program. Exit. Okay.
It is going to terminate my program. जब यूजर बोलेगा exit तभी ये प्रोग्राम terminate होगा, otherwise वो रिपीट करता चला जाएगा. Let us test it out. एक बार टेस्ट करते हैं कि भी ये रिपीट होता है या नहीं. अगर वो रिपीट होता है तो हमारा मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम रेडी है. Skeleton is ready. You can populate more cases. You can define your stack operations and you can call those operations. तो ये एक तरह से हमारा मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का skeleton रेडी हो गया. Now let me clear this output screen and let's try to run this code now. Well, okay, stdlib चाहिए exit function के लिए, so let me include that also. Okay, we include stdlib.h and then again we run this code. Well, so stack is initialized. I have a list of operations and it is asking me to enter the operation. Fine, I'll go for operation 1. उसने वैल्यू मांगा, मैंने वैल्यू भी दे दिया. उसने फिर से मुझे वो पूरा मेन्यू दे दिया. I can go for operation 1. जितनी बार मुझे पुश करना है वैल्यू पुश कर सकता हूं. अगर मुझे पॉप करना है आई कैन पॉप इट. अगर मुझे पिप करना है आई कैन पिप इट. सो 3. नाउ इट इज शोइंग एंटर वैलिड चॉइस क्योंकि मैंने वो केस नहीं लिखे हैं कोड के अंदर. केस 3, केस 4, केस 5 मैंने डिफाइन नहीं किया. दैट्स व्हाई इट गोज टू डिफॉल्ट केस, बट इट इज वर्किंग. व्हेन आई एम डन तो मैं बोलूंगा 8 and my program will exit. I'm back to the command prompt, right? We are back on the command prompt. So this is how we can implement manual driven program. इस तरह से अगर आप प्रोग्राम बनाते हो तो आप अपना स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री जो भी टेस्ट करना है कर पाओगे. आपको जो मन पड़े ऑपरेशन कॉल करो. हर बार नई नई सिचुएशन आप जनरेट कर सकते हो टेस्ट करने के लिए, whether your stack works properly or not. And this is kind of a demonstration. This is a demo of the stack. So what we have done today is we have gone for number of operations on the stack. पहले हमने वो operations देखे, सीखे, समझे, and then we come to the coding environment. We have created menu-driven program. We have also created stack as an abstract data type. Now the only thing that remains, we have to populate all these operations here. So in the next lecture, I'm going to show you some of these operations, and then we are going to call those functions from C file, and then we will test it. Maybe वो properly work करता है या नहीं. That will be our next step. Well, that's all for now. Let us stop here. It's almost time. So thank you everyone for being part of this session here, and see you in the next one where we will be completing our stack program. Thank you.